Hello everyone, welcome back to my channel. So after completing the little bit introduction about that poem Wind, now we are going to start with the very uh, complete introduction, complete summary, we can say that about that wind. So here we do have the stanza number one. Wind comes softly. Wind, हवा, come softly, थोड़ा धीरे धीरे आना. Don't break the shutters of the window. विंडो के जो शटर्स हैं डोंट ब्रेक, उनको तोड़ो नहीं. डोंट स्कैटर द पेपर्स. पेपर्स हैं वो जो उनको हवा आने से जो बिखर जाते हैं उनको बिखेरो मत. एंड डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ. और शेल्फ पे बुक्स को फेंको नहीं. द पोएट मेक्स रिक्वेस्ट टू द विंड, asking it not to blow so strongly that it breaks down the shutters of the windows as they separate men from the stormy environment outside. So he is asking the wind for protection. He also asked the wind not to scatter the papers in his room or to throw down the books from his bookshelves with its force. So, dear, in this stanza number one, the poet wants to talk with wind. The poet makes request. In stanza number one, he makes a request to the wind that he wants to ask from the wind not to blow so strongly. कि इतना तेज, इतना स्ट्रांगली मत आओ कि जिससे विंडो के जो शटर्स हैं वो टूट जाएं, कि वो जो है अलग हो जाएं, टूट जाएं. So he is asking the wind. He is just asking the wind for protection. वो बचाव के लिए बोल रहा है. That we need protection. Because if you blow so strongly now, so many things would destroy, even the human bodies also. So he is just wanted, he is just asking the wind for protection only. That he need the protection. He needs the protection. He needs the protection for those who are very weak. So he also asked the wind not to scatter the papers in his room. कि वो इतना सब कुछ बिखेर देती है कि इवन हवा चल रही है तो जो पेपर्स है ना वो भी क्या होते हैं, बिखर जाते हैं. और टू थ्रो डाउन द बुक्स फ्रॉम हिज बुक शेल्फ्स विद इट्स फोर्स. और जो बुक्स है ना वो बुक शेल्फ से गिर जाती हैं. आई होप यू विल अंडरस्टैंड दैट इन दिस द पोएट just only want to discuss something with wind. And I think in this stanza the poet is making a request from the wind that ki you have to blow silently, you have to blow softly, not to be strong, because आपके strong होने से ना बहुत सारी चीजें जो हैं वो क्या हो जाती हैं, destroy हो जाती हैं. So in stanza number 2, there look what you did, you threw them all down, you tore the pages of the books, you brought rain again. कि देखो तुमने ये क्या कर दिया, सब कुछ तो तुमने गिरा दिया. You tore the pages of the books, books के pages भी फाड़ दिए. And you brought the rain again. और तुम्हारी वजह से बारिश फिर से आ गई. So again the poet accuses the wind of blame. अब उससे अभी प्रे कर रहा था, अभी रिक्वेस्ट कर रहा था कि तुम ऐसे करो ऐसे करो. अब उसने क्या किया है, अब उसने ब्लेम करना स्टार्ट कर दिया विंड पे कि देखो तुमने किया क्या, सब कुछ तो फेंक दिया, सारे पेजेस फाड़ दिए और तुम्हारी वजह से जो रेन है ना वो भी दोबारा आ गई. सो हियर द पोएट एक्यूजेस द विंड ऑफ ब्लोइंग too strongly and creating the mess in his room
यहाँ पर जो पोएट है वो क्या कह रहा है, विंड को ब्लेम कर रहा है कि तुम इतना तेज चलती हो, इतना तेज ब्लो करती हो और क्रिएट कर देती हो एक मेस। मतलब रूम में ना सब कुछ अव्यवस्थित कर देती हो। हवा चल रही है कमरे में, हर एक चीज उड़ जाती है। पेपर्स रखे होंगे वो बिखर जाएंगे, बेड पे बेडशीट है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। जो भी चीजें हैं जो हल्की हल्की सी हैं वो स्कैटर हो जाती हैं। तो उससे जो रूम है ना वो मेस हो जाता है, सारा अव्यवस्थित हो जाता है। सो विद द बुक्स थ्रोन डाउन फ्रॉम द शेल्फ्स एंड देयर पेजेस torn, कि जो बुक्स हैं वो अपने शेल्फ से नीचे भी गिर जाती हैं और जो पेजेस हैं वो सब क्या हो जाते हैं, फट जाते हैं। सो ही सीज आउटसाइड एंड टेल्स द विंड दैट इट हैज brought rain with it, कि ही सीज आउटसाइड, वो बाहर की तरफ देखता है और वो ये बताता है विंड को कि देखो अब तुम्हारे स्ट्रांगली आने की वजह से बारिश भी तुम्हारे साथ आ गई। सो आई थिंक you will understand it very much clearly that what is the actual meaning that the poet wants to explain in that. And here I just want to tell you one more thing, that Subramanyam Bharati was the poet of this. And we all know that the wind is a natural phenomena. In this poem, the poet talks to the wind. The power of wind has been described, and the poet says that wind is destructive. He has linked the destructive power of the wind to the adversity of the life. He has linked, उसने लिंक किया है डिस्ट्रक्टिव पावर का को हमारी लाइफ की जो एडवर्सिटीज हैं, जो ऑब्स्टेकल्स हैं ना, उनके साथ कंपेयर किया है विंड को। कि जैसे स्ट्रॉन्ग विंड आती है हमारी लाइफ में सब कुछ खराब कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है, ऐसे ही हमारी लाइफ में बहुत सारी एडवर्सिटीज, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स जो है ना वो आते रहते हैं। एंड सेज दैट द वीक पीपल ब्रेक डाउन, और उससे होता क्या है, जो वीक चीजें होती हैं ना वो सब चीजें क्या होती हैं, तहस नहस हो जाती हैं। लेकिन जो स्ट्रॉन्गर होते हैं, स्ट्रॉन्गर पीपल एमर्ज आउट ऑफ एडवर्सिटी, वो मतलब क्या करते हैं, अपने आप को बहुत अच्छे से प्रूव करके दिखाते हैं। सो here the poem described the action of the wind. The poet asked the wind to come softly. Firstly, though he make mistake the wind not to break down the shutters, not to scatter the papers and throw down the books from the shelf. But the wind throws the books and tears the papers, pages. Then the poet says that wind makes a mockery of weaklings, कि वो मजाक बनाती है कमजोर चीजों का। इट ब्रिंग्स डाउन फ्रेल हाउसेस, वो क्या करती है, गिरा देती है। जो कमजोर होती है ना चीजें उनको क्या करती है, तहस नहस कर देती है। तभी उसने बोला ना कि जैसे वो रूम में आती है तो रूम में भी सब कुछ मेस कर देती है, खराब कर देती है। इवन की जो बुक्स हैं जिनके पेजेस उड़ रहे हैं ना उनको फाड़ भी देती है, और उसकी वजह से जो बारिश है वो फिर से आ जाती है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। यू आर वेरी क्लेवर एट पॉकिंग फन एट वीकलिंग्स, कि तुम बहुत चालाक हो, तुम कितना मजाक उड़ाती हो उन चीजों का जो फ्रिल हैं, क्रम्बलिंग है, लड़खड़ाती हुए चीजें जो हैं, जो स्टिल नहीं है, जो कमजोर हैं, जो घर कमजोर हैं, जो दरवाजे कमजोर हैं, जो राफ्टर्स कमजोर हैं, जो वुड, जो लकड़ियां कमजोर हैं, जो बॉडीज कमजोर हैं, जो जिंदगियां, जो दिल कमजोर है। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। तो विंड गॉड क्या करता है, आते हैं, मतलब वो विंड है ना वो मजाक उड़ाती है उन सब चीजों का। तो वो क्या करती है, हर एक कमजोर चीजों को बिल्कुल विनोज तबाह कर देती है, क्रश कर देती है। सो नाउ इन दिस stanza द poet speaks in a subdued tone to the wind। अब वो थोड़ा सा subdued tone में बात कर रहा है, saying that it makes mischief whenever it encounters anyone who is too meek, humble, and mild to protest against its action।
saying that it makes mischief. ये गलती हो जाती है whenever it encounters, जब उसका मुकाबला एक ऐसे के साथ होता है जो बहुत हम्बल है और जो माइल्ड है, to protest against its action, जो अपने लिए आवाज प्रोटेस्ट नहीं कर सकता, जो जरूरत से ज्यादा हम्बल है, उनके साथ मुकाबला होता है विंड का। इट टीयर्स डाउन डोर्स, वो सब कुछ फाड़ देती है, तोड़ देती है डोर्स को, वुडन हाउसेस को, एंड लिविंग पीपल विदाउट शेल्टर, वो लोग जो कमजोर हैं, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, सहारा नहीं है, फ्रॉम द हार्श वर्ल्ड आउटसाइड, और जो इस रूखे से संसार में बाहर हैं, बिना किसी सहारे के, बिना किसी आसरे के, उन सबको चीर देती है। This is an idiom implying that the troubles we face in life come as suddenly as the wind. ये कहावत है कि that the troubles we face in life, कि जो मुश्किलें हम अपनी लाइफ में फेस करते हैं ना, suddenly as the wind and also leave suddenly, जो अचानक से हमारी लाइफ में आती हैं वो अचानक से चली भी जाती हैं। ये मुसीबत हमेशा नहीं रहती, आती है तो चली भी जाती है। सो एज द पोइट सेज, द विंड कैन ईयर डाउन वीक बॉडीज एंड फ्रेगाइल हार्ट्स, कि जो विंड है ना, वो सिर्फ ब्रेक डाउन, सिर्फ तोड़ती है वीक बॉडीज को और उन दिलों को जो वीक हैं। दैट इज डिफिकल्टी इन लाइफ, ये हमारी लाइफ में वो डिफिकल्टीज हैं, यानी कि हियर द विंड to show the obstacles, the adversities in our life. So, difficulties in life can lead to a loss of hope as well as a loss of life. ये डिफिकल्टी है जो हमारी लाइफ में एक उम्मीद है उसका, उसको खत्म कर देती है, हमारी लाइफ को खत्म कर देती है। सो दस इट इज ऑल अप टू द विंड गॉड सेज द पॉइंट, कि अब ये तो सब तो पवन देव के हाथ में है कि वो विनोज सब कुछ बर्बाद कर देता है या क्रश कर देता है। अब तो ये सब चीज जो है वो सिर्फ किसके हाथ में है? विंड गॉड के हाथ में। सो दैट्स व्हाई हियर इट इज रिटन कि हमेशा जो विंड है वो उन सभी कमजोर चीजों का ऐसे मजाक उड़ाते हैं कि वो कोई भी चीज हो, हाउस हो, क्रम्बलिंग डोर्स हो, क्रम्बलिंग डाफ्टर्स हो, बट अगेन the wind god winnows and crushes them all. Okay, now we are going to start with the next. Stanza number 4. He won't do what you tell him. अब वो कह रहा है कि ये तो अब सब भगवान के हाथ में है। सपोज अगर मैंने भगवान से कुछ प्रेयर की भी है तो ये वो नहीं करेगा जो मैंने उसको बताया। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। अब भगवान को या किसी को भी एक बार कह के तो देख लिया कोई बात, जो विंड गॉड को कहा गया है, ही वॉन्ट डू, वो ऐसा नहीं करेगा जैसा उसको बताया गया है। सो लीव इट एवरीथिंग, डोंट बी डू एनी टाइप ऑफ प्रेयर, एनी टाइप ऑफ रिक्वेस्ट टू एनीवन। सो इंस्टेड ऑफ दैट, कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, मजबूत घर बनाते हैं। लेट्स जॉइन द डोर्स फॉर्मली, मजबूती से दरवाजों को जोड़ते हैं। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, अभ्यास करते हैं अपने शरीर को मजबूत बनाने का। मेक द हार्ट स्टीड फास्ट, दिलों को अटल बनाते हैं। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस। अगर हम इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से कर लेना तो जो विंड है वो हमारी एक फ्रेंड बन जाएगी। सो द पोएट नाउ स्पीक्स टू द रीडर्स। अब जो पोएट है वो बात करता है रीडर्स से, saying that the wind does not listen to anybody। अब वो थोड़ा सा पोएट है ना, वो रीडर्स को ये बोलता है कि सेइंग दैट, वो कह रहा है विंड डज नॉट लिसन टू एनीबॉडी, कि विंड जो है ना वो किसी की नहीं सुनती, एंड इट्स एक्शंस आर गवर्न्ड बाय इट अलोन। और जो उसके काम है ना, जो उसके एक्शंस हैं, उसको सिर्फ वो अकेला ही पर्सन होगा जो उस चीज को बना सकता है। वो किसी की नहीं सुनती, वो अपने एक्शंस, अपने
जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, हर चीज़ वो खुद अकेले ही सब कुछ हैंडल करता है। टू एस्केप इट्स हार्मफुल इफेक्ट वी शुड बिल्ड आवर होम्स ऑन अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। अब अगर हमें इसके हार्मफुल इफेक्ट से बचना है, क्योंकि वो तो हमारी बात नहीं सुन रही है, वही तो कह रहा है कि वो सुनना ही नहीं चाहती बात को। सो टू एस्केप, अब उस हार्मफुल इफेक्ट से बचने के लिए वी शुड बिल्ड आवर होम्स ऑन अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। हमें बिल्ड बना लेने चाहिए अपने घर बहुत ही स्ट्रॉन्ग, एंड ensure that their doors cannot be easily penetrated, get access to the wind। कि जो डोर्स है ना उनको इतनी आसानी से नहीं तोड़ना चाहिए। एंड इंश्योर दैट, और इस चीज़ का ध्यान रहे कि जो उनके डोर्स हैं कैन नॉट बी इजीली पेनिट्रेटेड गेट एक्सेस बाय द विंड, कि बहुत आसानी से एक्सेस ना मिले उनको, बहुत आसानी से वो कोशिश ना करें। सो ऑल्सो वी मस्ट ट्रेन आवर बॉडीज, हमें अपने बॉडीज को, अपने शरीर को इस तरह से स्ट्रॉन्ग करना होगा, एंड दे विल बी नो longer consider the wind an enemy। okay, so वी मस्ट ट्रेन आवर बॉडीज, हमें अपनी बॉडी को, अपने दिल को, अपने हार्ट को, अपने बॉडीज को, अपने कंप्लीट स्ट्रक्चर को, वी नीड टू ट्रेन, हमें उसको ट्रेनिंग देनी होगी प्रॉपर, टू रेसिस्ट फेस द इल इफेक्ट्स ऑफ द विंड, ताकि हम बुरे प्रभाव जो है ना विंड से, यानी कि जो हमारी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आ रही हैं, अगर उनका कोई भी बैड रिजल्ट है ना, तो उसको हम अभी से फेस कर सकें। सो इफ यू आर एबल टू डू दिस, अगर आप ये करने में समर्थ हो जाते हो, देन वी विल नो लॉन्गर कंसीडर द विंड एज एनिमी। ओके, सो नाउ इफ वी आर एबल टू डू दिस, अगर हम इन चीज़ों को करने में कैपेबल हो जाएं, हर चीज़ को स्ट्रॉन्ग बनाने में, देन वी विल बी नो लॉन्गर कंसीडर द विंड एज एनिमी। लेकिन वो जो बता रहा है कि देन वी विल नो लॉन्गर कंसीडर द विंड एन एनिमी, लेकिन हमने विंड फॉर्म को अपना दुश्मन नहीं माना। इंस्टेड द विंड विल इनवाइट अस टू बिकम इट्स फ्रेंड, इसकी बजाय तो क्या हुआ था कि जो विंड है विल आल्सो इनवाइट अस, कि वो हमें इनवाइट करे टू बिकम इट्स फ्रेंड, कि हम अपने आप को इतना मजबूत, इतना हार्डवर्क बना लें कि विंड खुद मजबूर हो जाए हमें अपने पास इनवाइट करने के लिए। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। So here in this, the poet advises us to be strong. Only then we can save ourselves from the wind. We should build strong homes and firm doors. Our bodies, our hearts should also be strong. Okay, so I hope you will understand that the poet advises us to be strong. Only then can we save ourselves from the wind. We should build strong homes with firm doors. Our bodies and hearts should also be strong. So it is the way to the world to kick the weak and be friends with the strong. With the strong, the poet blows. The poet blows. जो poet है वो बुझा देता है किनको, वीक फायर्स को, एंड मेक्स द स्ट्रॉन्ग फायर, और स्ट्रॉन्ग फायर को तो और ज़्यादा फैला देता है। मीन्स टू से कि अगर हम अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना लें, अपनी हर एक चीज़ को बहुत स्ट्रॉन्ग बना लें, सो वी मस्ट मेक आवर सेल्फ स्ट्रॉन्ग टू बिकम सक्सेसफुल, तो हम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं, और हम अपनी लाइफ के सभी चैलेंजेस को खुद से कंप्लीट कर सकते हैं। So that's why here it is written that the poet now speak to the readers, because saying that the wind does not listen to the anybody, कि भगवान किसी की तरफ जो है ना विंड जो है हवा,
वो किसी की कोई बात नहीं सुनती, वो अपना काम, अपने जो गवर्नमेंट है, हर काम को खुद गवर्न करना, वो अकेली ही है जो सब कुछ हैंडल कर लेती है टू एस्केप। लेकिन उसके बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट हैं उन पर जो वीक लिंक्स हैं। सो वी शुड बिल्ड, हमें अपना घर जो है वो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ बनाना चाहिए, जिसके लिए उन्हें फॉर्मली डोर्स की ज़रूरत होगी। ठीक है, वी मस्ट ट्रेन आवर बॉडीज, हमें अपनी बॉडी को ट्रेंड करना होगा। ठीक है, तभी हम उसकी जो है वो फ्रेंड बन सकते हैं। सो दिस इज एन ईडियम मीनिंग दैट इफ वी मेक आर करेक्टर स्ट्रॉन्ग, अगर हम अपने खुद के चरित्र को मजबूत बना लें, वी विल बी एबल टू कम्बैट एनी ट्रबल्स इजीली, तो हम जिंदगी की किसी भी समस्या का आसानी से पालन कर सकते हैं। However, if our character is weak, अगर हम वीक हैं, then the trouble will create प्रॉब्लम फॉर अस, तो जो प्रॉब्लम है वो हमारी लाइफ में, जो ऑब्स्टेकल्स हैं, जो ट्रबल्स हैं, वो हमारी लाइफ की मुश्किलों को और ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे। सो स्ट्रेंजर नंबर 5, द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स। अब जो विंड है वो क्या कर रहा है, वो बुझा देता है वीक फायर्स को। जो आग है जो बहुत वीक है ना, उसको ना बुझा देते हैं। ही मेक स्ट्रॉन्ग फायर रॉर एंड फ्लोरिश, और वो क्या करती है, जो आग है ना, जो स्ट्रॉन्ग है, वो रोर हो जाती है, बुराती है, और फ्लोरिश फैल जाती है। सो इज फ्रेंडशिप, सो इज फ्रेंडशिप इज गुड, उसकी दोस्ती बहुत अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे, हमें रोज उसकी जो एक बार प्रेज जो है वो लाइफ में करनी चाहिए। सो हेयर वी डू हैव द एक्सप्लेनेशन दैट here the poet describes how the wind has both bad effects and good effects. Okay, I hope you will understand that the wind also says that, the poet also says that if we should sing or devotion to the wind god, अगर हम wind god के प्रति बिल्कुल attentive हो जाएं, so the wind god on a daily basis, meaning that we should happily, I hope you will understand this, that we should happily face each and every obstacles in our life. So the conclusion is that the poem gives us a very important message. Very important message is to be there in this poem, that we should not feel bad, वी आर फेसिंग सो मैनी चैलेंजेस, कि हम अपनी लाइफ में बहुत सारे एडवर्सिटीज को, बहुत सारे चैलेंजेस को जो है वो फॉलो करते रहते हैं, बट हमें क्या करना चाहिए, बैड फील नहीं करना चाहिए। इंस्टेड वी शुड मेक आवर सेल्फ मेंटली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग, बजाय कि उस चीज़ पे बैड फील करने की, एटलीस्ट वी शुड ट्राई ईच एंड एवरीथिंग टू फेस दोज challenges. Okay, I hope you will understand this very much clearly. Okay. Okay, so according to literary devices, if we can say that rhyme scheme, but there are no rhyme scheme because the literary devices used to begin as follows. Okay, I hope you all will understand this. The people जो है वो इम्पोर्टेंट मैसेज जो है वो दे रही है, दैट वी शुड नॉट, हमें जो है वो बुरा नहीं मानना चाहिए अगर हमारी लाइफ में कोई भी चैलेंजेस हैं, कोई भी हार्डशिप है और हमारे पास कोई कॉल आ रहा है। So we are facing so much troubles. Okay, so we should make ourselves mentally and physically strong. तभी हम अपने लाइफ के जो challenges हैं उनका हम पालन कर पाएंगे. Only then we can say that that we can make friend of the wind, because why, how, instead of doing blame, instead of saying something else to the wind, it's better to make ourselves strong.
So that is the only fact, that we need to be strong, we need to be vigilant every time. Okay, so that we are able to do that questions easily. So it was just written by Subramanyam Bharti, the poet Wind, which is symbolic form, and the wind symbolize all difficulties, obstacles, struggles, and obstructions that we have to face in life, because these are the part of the life. So through the symbol of wind, the poet teaches its readers an important lesson. What is it? That, yeah, good, that one must be strong and bold. One must be related, okay, so that we have to face in life. मेटाफर विंड को यूज किया गया है, बट एक्चुअली इट वो symbolize all difficulties, adversities in our life. So through the symbol of wind, the poet teaches its readers an important lesson, that no one must be strong and bold. कि सिर्फ एक है, हम सबको क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना जाना चाहिए और बोल्ड हो जाना चाहिए, but we must have strong hearts as well as yes. So that's why I'm asking. We should have strong ears as well as that will cover, that will power the uncourageous and difficulty people surmount uh, victoriously difficulties and emerge. कि हम जो है ना लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सामना करने के बाद भी सिर्फ एक इसी उम्मीद से रहते हैं कि वी आर वेरी कॉन्फिडेंट पीपल, दैट वी कैन सरमाउंट, कि हमें इन सब चीज़ों से ज़्यादा जो है वो प्रोवाइड करा सकते हैं, विक्ट्री हम हासिल कर सकते हैं. So wind summary is all about wind. As the title suggests, the wind, on the other hand, is a unique feature. The poet captures, yes. So happily we have to face any trouble in our life. So instead of that, we should make ourselves mentally and physically strong to face all type of challenges. The poet wants to say that frail people break down quite easily, but strong individuals arise more grounded. So it's a fact that if the poet, the poem gives a virtual illustration that we ought to be intellectually intense and impressive to endure life's difficulties. In any cause, a feeble individual disintegrates and separates like an old structure. So we should make these strong powers our companions with our assurance and strength. So the poem, The Wind, contains a deeper metaphorical meaning. Okay, I think you will understand this. And later on, we will continue with that question answers. And before going to the end, I just want to tell you one thing, that what is the exact conclusion for that. Try to make it by your own words. But here we do have a conclusion, that the poet conveys a solid message that we ought not to cry or view ourselves as powerless when issues emerge in our lives. कि हमें कभी भी अपनी लाइफ में रोना नहीं चाहिए, जब भी हम कोई पावरलेस अगर हम हैं, अगर हमारे पास कोई इशू है, हमारी लाइफ में कोई टेंशन है, तो हमें रोना नहीं चाहिए. All things being equal, we should consider them a chance to investigate our capacity. सभी चीज़ों सबको इक्वल सब कुछ मिलता है, लेकिन हमें एक चांस की ज़रूरत है इन्वेस्टिगेट करने के लिए हमारी कैपेसिटी को. These issues make us intellectually and genuinely impressive. ये जो issues है ना, ये हमारी लाइफ के intellectual और genuine parts को impressive बनाने के लिए यूज होते हैं, and through them we figure out how to defeat the difficulty of life. और यही रीज़न है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं
कि हम अपनी लाइफ में कहाँ स्टैंड करते हैं और हमें कितनी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है. So I hope you will understand. So thank you. Have a nice day.